मोनिका भी एंटर हो ही रही है जितेंद्र सर, तो आते ही फिर को होस्ट बना दीजिएगा. I'll help you in this online orientation course on how to approach research in social science, conceptualization and methodological intervention. It is a semester-long program which started in July 2020 and this will last till 2020. This is 29th lecture in the series today. We are very happy that the course is going in a very well fashion and the participants have really shown zeal and the courtesy in their attendance that show that that this program is going to create an impact on all of us, and we will definitely direct the research in the area of social science. So now I must recognize here the organizers. This program is organized by Savitribai Phule PG Mahila Mahavidyalaya Sikar in association with Knowledge Partners, Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University Sikar, Department of Geography Government Lohia College Churu, Department of Geography Government Arts College Sikar. Now in the fourth month of this program, we are largely focusing on research methods, and today we are going to touch a very important topic, that is environmental impact assessment. And see, the aspects of impact assessment can be used through various ways in social science research, and we have a very eminent scholar, geographer and educationist, Professor Madha Suresh with us. We will be definitely benefited with the expertise which he is having in the field of research. For the recap of the previous session, I request here to Renu Bagadia to present the report in English. Good evening to all. The topic of the lecture held on 24th October 2020 was interview schedule, which was presented by Professor Gurram Srinivas. Professor Srinivas first explained why we chose this topic because survey on field, it is an important to be taken care of. Then he explained his schedule. According to him, a lot of literature among researchers is less on this subject. Then he gave some suggestion for success. Renu? Yes, sir. Beta, बीच में आवाज गायब हो गई थी. Can you start from the beginning? Okay, sir. Please. The topic of the lecture held on 24th October 2020 was interview schedule, which was presented by Professor Gurram Srinivas. Professor Srinivas first explained why we chose this topic, because if we survey on field, it is an important technique. The interview schedule has a certain structure which needs to be taken care of. Then he explained what is the difference between the questionnaire and interview schedule. According to him, a lot of literature has been written for other techniques of survey, but due to lack of literature in the interview schedule, awareness among researchers is less on this topic. Then he gave some suggestion for successful implementation of interview schedule, like how to make it more interesting and effective. Professor Srinivas told that there are more methods to research in social fields such as observation, field notes, etc. But the most important method is interview schedule. He presented 4 examples to explain it. The first example is related to changing behavior towards marriage in youth. It made us understand how the interview schedule should be, how to use objective and subjective questions. Second example was based on large-scale survey on public libraries. Then he gave an example of sample template. He said that we should start from broad and come to micro level in research, should take care of the order of questions, why should not be used. After that, he explained interview method, interview schedule, and interview guide. The session was concluded after question answer round and a formal vote of thanks. Thank you. Thank you, Renu, for very brief and effective recap of the previous session. अब मैं पिछले सत्र की हिंदी में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयुषी जैन से आग्रह करता हूँ.
आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष 24 अक्टूबर 2020 को आयोजित 27वें सत्र की रिपोर्ट हिंदी में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्र का आरंभ जितेंद्र डी सोनी सर द्वारा किया गया, जिन्होंने डॉक्टर गुरु श्रीनिवास को आमंत्रित किया और प्रतिभागियों से उनका परिचय करवाया। गत सत्र की हिंदी व अंग्रेजी में रिपोर्ट मौसम बादल द्वारा प्रस्तुत की गई। उसके बाद डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा साक्षात्कार अनुसूची विषय पर व्याख्यान दिया गया। आपके साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इस विषय से व्याख्यान का आरंभ किया। आपने बताया कि किसी भी सामाजिक शोधकर्ता को शोध कार्य के दौरान जब सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है तो वह साक्षात्कार अनुसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग करता है, जो कि एक आम बात है। इसके बाद आपने साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली को उनकी शब्द रचना, इतिहास और उपयोग के आधार पर समझाया और बताया कि साक्षात्कार अनुसूची एक शोध उपकरण है जिसका उपयोग सर्वेक्षण में किया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से साक्षात्कार शब्द का प्रयोग सन 1869 में किसी व्यक्ति से बात करके उसके विचार जानने के अर्थ में किया जाता था, ताकि उसके विचारों को प्रकाशित किया जा सके, जबकि अनुसूची का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1863 में मुद्रित समय सारणी के रूप में रेलवे में किया गया। इस प्रकार साक्षात्कार एवं अनुसूची का प्रयोग काफी पुराना है, परंतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग महज 20 से 30 वर्ष पहले से किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त एक अन्य उपकरण प्रश्नावली है, जिसका उपयोग सन 1901 से औपचारिक प्रश्नों की सूची के रूप में किया जाता रहा है। इसके बाद आपने प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची में अंतर स्पष्ट किया। आपने बताया कि प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास डाक अथवा मेल से भेज दिया जाता है, जिसके उत्तर वह स्वयं देता है, जबकि अनुसूची को प्रश्नकर्ता स्वयं उत्तरदाता से पूछकर भरता है। प्रश्नावली के लिए प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता में संपर्क होना आवश्यक है, जबकि अनुसूची में ऐसी कोई अनिवार्यता जबकि साक्षात्कार अनुसूची में इसकी अनिवार्यता है। प्रश्नावली को आंकड़ों में परिवर्तित कर सकते हैं और ये विस्तृत सर्वे के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जबकि अनुसूची द्वारा अधिक समय में छोटे क्षेत्र की गहन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद आपने साक्षात्कार अनुसूची की संरचना को समझाया। आपने बताया कि साक्षात्कार अनुसूची की संरचना का महत्वपूर्ण अंक प्रश्नों का क्रम है, जो सदैव रुचिपूर्ण बना रहे। ऐसा करने के लिए वैकल्पिक और वर्णनात्मक प्रश्नों को क्रमवार संयोजित करना चाहिए, खुले हो, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न बंद हो। इससे उत्तरदाता की रुचि एवं सजगता बनी रहती है। इसके बाद आपने साक्षात्कार अनुसूची की शोध कार्य के अनुरूप उपयुक्त संरचना को समझाने के लिए 4 उदाहरण प्रस्तुत किए। पहली साक्षात्कार अनुसूची में 11 प्रश्न थे, जिसमें अंतिम प्रश्न वर्णनात्मक था। शेष प्रश्नों के लिए अधिकतम एक पंक्ति का स्थान छोड़ा गया था। इसका उद्देश्य विवाह का अर्थ आपकी नजरों में क्या है विषय पर विचार जानना था। अतः उत्तरदाता के नाम के स्थान पर उसकी उम्र, लिंग, जाति, पारिवारिक स्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे गए। दूसरी साक्षात्कार अनुसूची सार्वजनिक पुस्तकालयों में कंप्यूटर की सुविधाओं के उपयोग से संबंधित थी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया गया था। तीसरा साक्षात्कार अनुसूची कुछ सिद्धांतों व तकनीकों पर आधारित थी, जिसके 3 भाग थे। इसके पहले भाग में साक्षात्कार अनुसूची का प्रारंभ आसान प्रश्नों से किया गया, ताकि उत्तरदाता को सर्वेक्षण का उद्देश्य समझाया जाए और उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके दूसरे भाग में सर्वेक्षण से उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिससे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकाधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सके। और तीसरे भाग में संपूर्ण साक्षात्कार का प्रश्न का सार प्रस्तुत करते हुए उसे समाप्त किया जाता है और उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार अनुसूची का यह तीसरा प्रारूप व्यवस्थित था। डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत चौथी साक्षात्कार अनुसूची बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संतुष्टि सर्वेक्षण पर आधारित थी, जिसमें प्रश्न बहुत सारे थे, परंतु इनके उत्तर अंकों के आधार पर माने गए थे। इस प्रकार आपने चारों प्रारूपों को विस्तार से समझाते हुए प्रथम प्रारूप को सर्वश्रेष्ठ बताया, जिसमें सीमित प्रश्नों से अधिकाधिक सूचनाएं एकत्र करवाई गई। अतः कम समय में आवश्यक सूचनाएं संग्रहित साक्षात्कार अनुसूची एक श्रेष्ठ मार्ग है। आपने बताया कि प्रश्नों में लय होनी चाहिए, जो उत्तरदाता को व्यापकता से सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य की ओर ले जाए। आपने यह भी बताया कि साक्षात्कार अनुसूची का आकार उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यह 1-2 प्रश्नों से लेकर 10 प्रश्नों तक हो सकती है। इसके उपयोग के लिए न्यूनतम 50 उत्तरदाता होने चाहिए, परंतु 200 या 300 से अधिक उत्तरदाता होने की स्थिति में प्रश्नावली का उपयोग करना उचित होगा। इसके बाद आपने इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू शेड्यूल में अंतर बताते हुए अपने व्याख्यान का समापन किया। फिर डॉक्टर जितेंद्र सोनी सर द्वारा व्याख्यान का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया। इसके बाद डॉक्टर श्रीनिवास ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।
अंत में मिस्टर नितेश नालूनिया ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर सत्र का समापन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आयुषी, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपने पिछले व्याख्यान के हर पक्ष को छूते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से सार प्रस्तुत किया। अब मैं बिना वक्त जाया करे आज के जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर माधा सुरेश, हम उनको आमंत्रित करेंगे और उनके इंट्रोडक्शन के लिए और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मॉडरेशन का आज का कार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार सर देखेंगे। तो मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। I welcome our guest and speaker, Professor V. Madha Suresh, who is going to deliver a lecture on environmental impact assessment, a case study of Parler River Basin. First of all, I would like to introduce Professor Suresh with the participants. Professor Suresh started his education as a BSc in Geography with Botany and Geology as allied subjects from Government College Salem, and he also did B.Ed from Annamalai University, post-graduation in MSc Geography from University of Madras, and other programs like MPhil and PhD also did from University of Madras. He also did postdoctoral program in University of Madras and pursuing at present MBA degree. It seems to look like that he is related to geography and education fields. After that, he started his professional career served as an assistant director at Inland Waterways Authority of India Ministry of Surface Transport in 1995 to 2000. Then he served as assistant professor in geography department NCRT from 97 to 2000. And then he joined University of Madras as assistant professor in 2001 and remained associate and professor in Department of Geography up to 2015. After that, he served as professor and head from 2015 till date. This is his professional experience, and he has also act as different professional administrative posts like director of IQSC, member of IQSC, member Senate of University of Madras, member Academic Council in University of Madras, professor and head of Center for Natural Hazards and Disaster Studies, the post he is holding at present, professor and head Department of Education and professor Department of Geography. He remained as a member of Board of Studies in different universities of the world, that is abroad, like University of UK, Staffordshire University of UK, Salzburg University in Austria, Southeastern University, Sri Lanka. He also remained as part of Board of Studies in different external examiner in different universities like University of Bangalore, Karnataka University, Hyderabad, JNU, JMI, and Bharati Darshan University. His research experience is he has worked in International Ocean Institute, Dalhousie University, Canada, and attended an international training program on United Nations Convention on Law of the Sea. He also worked with UNEP, Northampton University, Staffordshire University, Bonn University as a research in his research experience. His achievements are he was awarded as Senior Research Fellowship Award by Council of Scientific and Industrial Research. He also got Commonwealth Fellowship Award to visit University. He is part of different societies and has been a member of different societies like International Ocean Institute, Canada, NAGI, Indian Geographical Society, Indian Society of Victimology, Association of Punjab Geographers, and Indian Society of Geoinformatics. He is part of different committees in different universities. He has published 5 individual books with different ISBN numbers and also published 36 papers in different journals. He has done different refresher, orientation, and staff development programs at University of Mysore. He has also completed many research projects there are many who are international, like Simon York University, Canada, Bonn University, Germany, and different projects at national level which are funded by UGC. And he has completed his different
research experiences at universities. It gives me pleasure to invite Professor V. Madha Suresh for delivering his lecture. Professor Suresh, for inviting him to give his lecture, I would request Professor Suresh that, sir, we have many participants from different parts of the country, and most of them are from northern India. So they may have some problem with the language. So we have decided if you feel like that you give your lecture, and after a part of your lecture you invite me, I will translate that in Hindi. So I request Professor to start his lecture. Sir, you are invited and board is yours. Okay, sir. Thank you, sir. At the outset, I thank the organizers who has given me opportunity to take up the environmental impact assessment lecture to the various faculties Video is not from on. video. Oh, you want to see my face? Okay. Okay. I thank all the organizers as well as Dr. J.D. Soni. He personally invited me for this lecture. And also I thank Dr. Ravinder Kumar for giving me a brief introduction about me. I think this is the third online lecture I'm giving, and I have certain technical problems. So yesterday only I had a trial and error with my daughter. Yesterday I was this lecture, the lengthy lecture, very good lecture. Then I don't know how I'm going to upload the PPT and all. Likely Dr. Soni sir helped me. So with that PPT, just I want to show you what I have done for this research. Again, I have 3 slides. I doubt whether I could execute all 3 PowerPoint presentation. So one is on environmental impact assessment. What are the various definitions for phases involved in this environmental assessment? And the second one is the recent controversy about the environmental impact assessment draft 2020. If time permits, I can take up that also later part. And now I would like to go directly for the environmental assessment, the case studies of Paula River Basin. So that's what I thought of doing now. As Dr. Ravinder Kumar sir said, though I was in Delhi for 2 years, I could not able to pick up by Hindi, but my wife is good in fluent of Hindi, as well as my daughter. And wife also still studying, though she's a computer engineer, she's studying Hindi. But I am struggling, but sorry, I am unable to make it out. But I can listen, but I cannot speak Hindi fluently. Otherwise, I would have taken part of Ravindra Kumar's work also. And so I do like this. Instead of I'm going like a paragraph, 2-3 lines will be nice. If you highlight to 2-3 points, immediately Dr. Ravindra Kumar sir can translate in Hindi. Otherwise, the last I mean yesterday's program, no, it was quite lengthy. It will be difficult for all people. That's what I feel. So that is one I wanted to tell you. So I think there is no break. It seems yesterday seen the 2 hours it may go continuously. At the end of the lecture, after 6 o'clock, there may be a discussions, question and answer discussion. Then there is no issue. And in between also, if you need any clarification, the people, I mean, faculty or someone is wanted to ask me, then they can stop me to ask. There is no issue at all. So now I'm trying to begin my slideshow, but again, Dr. Soni sir had helped me. Let us see. Is it okay now? Is it visible? You can start now. Yes, sir. Sir, now could you visualize? No, sir, not yet. Not yet. Okay, sir. So I clicked share screen.
First you open your presentation in your laptop. Yes, now Yeah, it is coming now. Now It is coming now. now Okay, it's sir. coming. Okay, sir. But it's a WhatsApp message somewhere. Now it's okay, sir? Yeah. Yeah. Yes, sir. PowerPoint. Is okay, sir? Yes, sir. For full screen. Very fine. Okay, sir. Very kind of you. Dear participants, I came to know that you are from a different discipline. So we had a different discipline, starting with arts, then humanities, then social science, the science, now is gone to information science. So cutting across many disciplines, taking up a particular methodology to carry out a particular research is difficult nowadays. So if you look at any research, the research mostly it is an interdisciplinary research I have seen, or a multidisciplinary research or a transdisciplinary research. So what I'm going to show you also, it is a combination of all kind of researches which was carried out by the team. But whereas this work was exclusively done by me. This project was funded by Council of Scientific and Industrial Research. I am thankful to the CSR also. So what is the environmental impact assessment? Even recent also, there are a lot of controversy over that. Environmental impact assessment is a systematic study as well as a scientific study wherein if any proposal of bringing any policy or a project or any industries or extension of any existing project, the government of India, particularly the Minister of Environment and Forest, is imposing to submit the environmental impact statement or report to the by the proposal proposed industrialist to the government to get the approval. Then only they can go for clearance. Then they can start industrial activities. So, what is the environment? You know that the environment is set up all the four sphere, the atmosphere, the air, the hydrosphere, the water, the lithosphere, the land and the soil, and the biosphere, the existing of both flora, fauna, including the human beings. So how the set of four environment getting into the various crises or issues. So that is being done by the impact. Impact is nothing but the changes. If any changes come into the environment, whether it is a positive impact on the community or the environment or a negative impact on the community or the environment. The assessment, how you are going to measure the likelihood of the impact by using various technologies. So as I said at the beginning, in those days, yesterday I seen a wonderful talk by Professor from the JNU, how to use the various tools, questionnaire, schedule to collect the information. So those days are gone, but without the questionnaire also, it is very difficult to find the rudimentary information from the basic level. So that is also one kind of research, but now we have information technology, geoinformatics, where is the remote sensing plays a major role, as well as the GPS plays a major role, as well as the GPS is giving a lot of design to bring out the various thematic maps to take up a particular decision. So we have a different kind of tools we are using for researchers. Okay. So here, the polar basin, why I'm mentioning the polar basin, it is the origin of the polar. Polar, literally the meaning is called milk or. Pal means in Tamil, Telugu, it is a milk. So such a pure river, water is originated from the Karnataka and pass through Tamil Nadu and finally end up with the Bay of Bengal. Take 100 years, 200 years, even last 60, 70 years back, such a pure river
was used for various purposes for the agriculture. Even people used to have a bathing, and they used to have those water for the potable purposes and industrial activities and so on. After the what is called that East Indian Company, they came to India. They started the leather business. The leather business, the tanneries. Tanneries means nothing but the leather process industrial activities. So there is a mushroom growth of the tanneries, the leather processing industries in and around the Pala River Basin due to various reasons. I will explain one by one the various reasons. So the existing of that tanneries or leather, both are same. Tanneries and the leather industries both are the same. So those industries, they use the pure water for their processes, and after the processes, all the wastewater, the effluent water, the solid waste, everything they're dumping into the river, the Polar. As a result, the Polar water get into deterioration, and nowadays the water is not fit for agricultural purposes and not for potable purposes, and it's not at all used for any other purpose, even for washing or any other purposes. So that is a stage of now we found in the Polar River Basin. So I said the tanning. The tanning is nothing but it is a kind of a process where the hides and the skins, the hides and the skins. You know what is the hide and the skin? The skin of the cow and the buffalo, we call it the hides, where the dermis is very thick. Where the skin is the goat and the sheep, those skin are we call as skin. Okay, the dermis of goats and skin we call it the skin. So both the hides and skins are mostly derived from the local market, like we are seeing in this picture. There's a weekly market. So every village, for a Monday there will be one market. There's a Monday market, Tuesday market, Wednesday market. They used to collect the hides and the skins from the local market, and they will pile up in this area. They will collect it, and finally they take it to the tanning or the leather industrial areas. So these raw skin or hides or the skin, they cannot keep it for a long time as it is. Otherwise, due to the bacterial activities, it may decay. Due to bacterial activities, it may decay, and within 3, 4, 5 days, the entire skin and it will get damaged. So in order to preserve, they're using the common salt called sodium chloride. They use sodium chloride. They'll smear over the hides and the skin, and they will keep it in a particular warehouse. So 1 week, 10 days, 15 days, 20 days, nothing will happen because of that sodium chloride. Okay. So this is the stage 1 where they're keeping excess amount of salt in the skin, so they're piling up. At the time of process, they have to take the skin into the water to soak out all the waste materials. So what are the waste materials, like a blood or a hair, any unwanted materials? Along with that, the sodium chloride also will be sent out. As a result, this process is a continuous process. As a result, the sodium chloride accumulation in the running water as well as in the underground water is keep on accumulating. As a result, one point of time, the underground water is totally contaminated because of the sodium. Okay, so here the next stage is the process. So we have 2 types of process. One is the vegetable tanning, other one is chemical tanning. Sir, sorry, sir. Can you translate, sir? Sorry, extremely sorry. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. आज का जो व्याख्यान है
प्रोफेसर वी माधा सुरेश के द्वारा जो दिया जा रहा है। इस व्याख्यान में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बताते हुए प्रोफेसर सुरेश ने बताया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। उन्होंने बताया कि ये एक प्रकार का साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट है, यानी एक असेसमेंट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का। यदि कोई भी उद्योग या कोई भी इंडस्ट्री किसी स्थान पर स्थापित की जाती है, कोई कार्य शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट के ऊपर उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और वो जो अध्ययन है वो सरकार को सबमिट किया जाता है और उसके आधार पे अप्रूवल इंडस्ट्री को मिलता है। ये सभी बताते हुए सर ने बताया कि पर्यावरण जो है उसके अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं, ये इसमें देखे जाते हैं। पहले के समय में जो सामान्य हमारी मेथोडोलॉजी थी जिसमें क्वेश्चनरी एंट्री शेड्यूल है, इनका उपयोग किया जाता था, लेकिन क्योंकि आजकल जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, जिसके अंतर्गत जीआईएस जीपीएस तरह के जो हमारे मेथड्स हैं उनका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करके और इन अध्ययनों को और सुगम और आसान बना सकते हैं। पालर जो बेसिन है उस पे ये अध्ययन बेस्ड है। सर ने बताया कि पालर बेसिन जो है, जो पालर नदी है, उसका मतलब मिल्क है वहां पे, और मिल्क यानी प्योर, यानी बहुत ही स्वच्छ जो जल वाली नदी हो उसे पालर नदी कहा गया है। और इसका जो जल था पहले बहुत स्वच्छ था, जो कि इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर में पीने के लिए काम में लिया जाता था, सभी प्रकार के कार्य इससे किए जाते थे। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, क्योंकि इसके जो बेसिन है उसमें विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज की स्थापना कर दी गई, जिसके कारण इसका जो पानी है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होता गया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे जो सर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि वहां पे जो चमड़ा उद्योग है उसका ज्यादा लोकेलाइजेशन है, यानी वहां पे वो ज्यादा केंद्रित है। और सर ने बताया कि इसकी जो बेसिन है वहां पे लेदर बिजनेस है, यानी बहुत सी टैनरीज जिन्हें हम कहते हैं, चमड़ा उद्योग की जो इंडस्ट्रीज है उनको टैनरीज कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा स्थापित होगी, जिसके कारण कि इसका जो पानी है वो गंदा होता जा रहा है। और जो प्रोसेसिंग होती है टैनरी इंडस्ट्री के अंदर चमड़े की, उस प्रोसेसिंग के अंदर क्योंकि उसको सही रखने के लिए, चमड़े को सही रखने के लिए उस सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड जब हम पानी के अंदर उस चमड़े को सॉक करते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा अन्य जो गंदा जो ब्लड वगैरह है या अन्य जो बाल वगैरह है वो उस पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी को गंदा करते हैं। ये सर ने हमें बताया है। सर, नाउ इट्स टू यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. You are explaining better than. Yes, sir. The tanning process. We have various process. The first one is soaking. I just saw also explained what is the soaking. Soaking is nothing but the taken of the raw and the skies from the market. So they will immerse in the pure water to remove it for the next process. So as a result, we said that the pollution load of sodium chloride will be released. That is the soaking. The next one is liming. So what is the liming? You know lime. It is not like a lemon lime. Sorry. Chuna, sir. Chuna. Yes, sir. Sunna. Yes, sir. And Hindi is carbonate. So carbonates are very good, sir. So it is having a alkaline nature, very alkaline nature. So normally that the hides and the skin have a lot of hairs. Somewhat you have to remove the hair. So in order to remove the hair, first as a first step, the tanners. So they will collect all the hides and the skins. They will dump into a lime pit, as you said, no. In the lime pit, it will be some 30 to 40 meters dimension, where the dump hides and the skins, and they'll add the lime, and they'll fill water, and they will immerse for more than 10 days. So as a result, what will happen? The lime water may get into the hair root. Once the lime water get into the hair root, see, the hair will become little bulge after 10 days. So they will remove the hide or the skin. Then they will put on the wooden slot, the slanting wooden slot. Then they will take a normal knife
and they will simply press over the skin. While giving slightest press enough, they can remove the hair with the root itself. So that they will scientifically, they can remove the hair with the root itself without any damages. So here what is the issue is, the lime after usage of the lime, the tanners, they won't keep the old lime for the next process. So they want to dump it. They don't have a place where to dump it. Simply they will dump either on the open environment or in the water bodies or on the roadside. We are going to see that picture later on. Please, sir. सर ने प्रोसेसिंग, जो चमड़े की प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में बताते हुए बताया कि पहले जो प्रोसेसिंग शुरुआत के अंदर वो लोग सोकिंग करते हैं। सोकिंग का मतलब सिंपली जो चमड़ा है उसको पानी में डाल के और निकालते हैं ताकि उसके जो रेजिड्यूज हैं वो निकल जाएं। लेकिन बाद में उसकी स्किन को उसके हेयर्स को अलग करने के लिए, यानी बालों को अलग करने के लिए एक नई प्रोसेसिंग होती है जिसे लाइमिंग कहा जाता है। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना, उसको और पानी को एक पिट में रखते हैं और उसमें फिर चमड़े को डाला जाता है और 10 दिन तक उसको रखा जाता है। 10 दिन के बाद जो हेयर्स हैं वो बल्जी हो जाते हैं, जिसके बाद चाकू से, स्किन से उसको अलग कर लिया जाता है और ये चमड़ा अलग करने की एक प्रोसेस है। इससे हेयर्स हैं वो अलग हो जाएंगे और चमड़ा अलग हो जाएंगे। ये इसलिए बताया जा रहा है कि क्या मटेरियल है जो नदी में जाता है और फिर दोबारा जब यही प्रोसेसिंग होगी तो उसी लाइम पिट को यूज नहीं किया जाएगा। उसमें जो सीवेज है उसे फिर या तो बाहर डाल दिया जाएगा या खुले के अंदर, वो भी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, या फिर नदी में डाल दिया जाता है। सर Yes, sir. So it's a limestone. Sir also said the same thing, limestone. So the next process is called deliming. So after the liming, the next process is called deliming. So why we call this deliming means since it was immersed in the high alkaline acid, and during the next process, where is the dyeing process, that the pH value has to be bring below 3.5. So as a result, they have to add more chemicals to bring the neutral level to the acidic level. So they are adding various acids in this next process. Again, the spent amount of acid, the excess acids will be leached out from the industries into the environment. So that is the next process where the pollution is being released from the industries. The next process, that is the last process, the tanning. I said the tanning are two types. One is vegetable tanning, the other one is chemical tanning. That is a chrome tanning or a chemical tanning. Generally, it is called a chemical tanning. So, what is the vegetable tanning? After the deliming of the hides and the skins, so they will immerse the semi-processed hides and the skins into a drum, a wooden drum, with a vegetable oil, fish oil, and other bark of certain species in the wild trees. So they will immerse it for 30 to 40 days, and they will remove the hides and the skins, and they will dry it up, and they will take it to the next process. So those vegetable tanning is called, it is a environmental friendly tanning. It will not cause any environmental problem at all. But the product from the vegetable tanning is mostly used only for chapel and saddlers in the horse, the saddlers, or in an aeroplane they're using for what is called this for cockpit. So only for even in the villages in southern India, they used to draw water from the well using cows and the bulls. So for leather bucket, for those kind, they're using this leather. Those leather is, they consider this inferior leather, but the usage is also very limited one. The other tanning is called the chemical tanning, where we can use the uranium, then ferrous iron, and the zinc. All four chemical can be used for the tanning, but because of the quality
and texture, and for fine grains, they're using mostly the chromium tanning material as a tanning material. So what they will do, mostly nowadays they're taking a chromium only. They'll take a chromium solution. Again, they will create a solution, and they will put all the hides and the skins. They will put it in a wooden drum, and they'll rotate the drum for 3 days. But where is vegetable tanning? It goes 30 to 40 days. Whereas chromium tanning, just 3 days. What will happen? The chromium essence will go into that skin. So what is the skin? Skin is made up of fibrous. So what is a fibrous? Fibrous also is made up of various small cells. So in between, we have a lot of the gap. So within the gap, the chromium solution will penetrate and it will be stand as it is. Since the chromium is there within the fibrous, or it may not allow any bacteria to get in, and the leather hides and the skins will be protected. So there will not be any further decay. As a result, that leather will be stand as it is till its lifetime. Please, sir. सर ने बताया कि लाइमिंग की प्रोसेस के बाद, क्योंकि लाइमिंग की जब प्रोसेस होती है तो एल्कलिन मटेरियल यूज होने के कारण उसका जो पीएच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके ऊपर डाइंग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसकी जो पीएच वैल्यू है उसे कम करना होता है, और कम करने का मतलब डीलाइमिंग की प्रोसेस करनी होती है। डीलाइमिंग की जो प्रोसेस है उसमें भी एसिड का उपयोग किया जाता है, बहुत से अमल है उनका उपयोग किया जाता है ताकि डाइंग उसके अंदर अच्छे से हो सके बाद की प्रोसेस के अंदर। तो डीलाइमिंग की प्रोसेस इसमें की जाती है, जिसमें एसिड्स का उपयोग किया जाता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए खराब होते हैं, उसको भी नदी के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा टैनिंग की जो प्रोसेस है वो 2 प्रकार की सर ने बताई है, एक वेजिटेबल टैनिंग और एक केमिकल टैनिंग। जो वेजिटेबल टैनिंग है उसमें मुख्य रूप से किया जाता है, एक ड्रम के अंदर वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें जो सेमी प्रोसेस्ड हाइड एंड स्किन होती है, जो चमड़ा होता है, उसे डाला जाता है 40 दिन के लिए, और उसको फिर ड्राई किया जाता है। और वो जो है वो हालांकि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन इस तरह से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज में नहीं होते। वो मुख्य रूप से हम स्लीपर्स हैं उनके अंदर, चप्पलों के अंदर, या एरोप्लेन में जो सीट है उसके अंदर काम में आते हैं, या जो पानी निकालने के लिए चमड़े का जो बैग है वो काम में लिया जाता है उसमें आते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत कम काम में आते हैं। उसके अलावा जो दूसरे प्रकार की जो टैनिंग है जिसे केमिकल टैनिंग हम कहते हैं, उसमें केमिकल्स का उपयोग होता है, मुख्य रूप से क्रोमियम, एल्यूमिनियम, फेरस यानी आयरन प्लस जिंक, इन 4 प्रोडक्ट्स का उपयोग इसमें किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से क्रोमियम का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्रोमियम इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो चमड़ा बने, जो उसकी स्किन निकल के आए, उसकी क्वालिटी और उसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा निखर के आए, ताकि उसका उपयोग सबसे ज्यादा हो सके। होता क्या है कि जब क्रोमियम के अंदर स्किन को डाला जाता है तो उसके बीच में जो जगह होती है उसमें क्रोमियम चला जाता है और वो बैक्टीरिया वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे वो जो चमड़ा है वो ज्यादा डिके नहीं कर पाता बाद में, और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और उनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि स्किन होती है वो फाइब्रस होती है, उसमें जगह होती है, तो वहां पे क्रोमियम चला जाता है और इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिके, डिके से प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो केमिकल्स का उपयोग जो हम इस टैनिंग की प्रोसेस में करते हैं, ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। सर, थैंक यू सर। So the pollution load is being released at various stages, which I said now, and let us see what is the pollution types. So what do you mean by pollution? Pollution is a process, a continuous process wherein the environment of the 4 air, water, land, and the biosphere is being degraded by means of the pollutants. So what is the pollutants? We have 3 types of pollutants here. The one is the solid one, the liquid one, and the gaseous form. And whereas in the tannery, we can find all the 3 pollutants: gases, solid, as well as the liquid one. Okay. So let us see the solid one, the chromium. The chromium is a must in our body for the purpose of cell division. For the purpose of cell division. So you might have observed in your house,
or in a relative house, after the childbirth, the child is allowed to sleep for ever, almost 24 hours, always will be sleeping. So during the sleeping time only, the cell division will take place. So here, the chromium will act as a catalyst for the cell division. So in this case, the chromium level in the blood is said to be 0.005 parts per million. You know, million is a 10 lakh. It's not in one parts. 0.005 parts per million alone is required in our blood, in a human blood. Okay, so that is helpful for the cell division. Suppose the same chromium is going more than this level, permissible limit, it may cause carcinogens. Carcinogens, you know, is a cancer producing substances, cancer producing elements. So that's why we consider the pollution in the area is a very, very dangerous one, particularly that chromium. So that's what people are agitating the local people, but vehemently the tanners, they're exporting chromium to the most of the foreign countries because of it gives foreign exchange heavily when compared to other exporting. Okay. Sir, explain, sir, then I will take next one. सर ने बताया वेजिटेबल टैनिंग और केमिकल टैनिंग के द्वारा जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम पोल्यूशन लोड कहते हैं, ये जब नदी में जाते हैं तो वो विभिन्न प्रकार से हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें एंटर करता है और बायोस्फीयर में एंटर करके और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। सभी प्रकार के पोल्यूटेंट्स टैनिंग की प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेंट निकलता है वो क्रोमियम है। और चूंकि क्रोमियम है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर ये बहुत अपना योगदान प्रदान करता है, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। लेकिन वो सिर्फ 0.005 पार्ट्स पर मिलियन के रूप में ही हो तो ज्यादा सही है। यदि इससे ज्यादा वो हो जाता है बॉडी के अंदर तो वो एक कार्सिनोजन सब्सटेंस के रूप में काम करता है, यानी कैंसर जो जनरेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनके रूप में काम करता है और हमारे जो स्वास्थ्य है, मानव का स्वास्थ्य है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। सर, thank you, sir. So we have the liquid waste, as he said, all the acid after the process they let out into the open area, and even the gases, various gases, toxic gases also being released from the tanneries. Just now we talked about the water pollution. There's the air pollution. All the waste is being in order to prepare a gelatin. They'll collect the bones and the fat, and they will boil it in a drum. And they're using the local the tire as a burning material. As a result, it gives a lot of air pollution in this area. So this is being done for generation of the gelatin. So as a result, it gives rise to air pollution. And the land pollution, all the waste material they're dumping into either the agricultural land, knowingly, unknowingly, the farmers, they're collecting the waste material. As a result, it may be a green manure for that, but without knowing the consequences, they apply, and finally they end up with zero production. So I will discuss this issue later. So like this, the tannery is polluting water, the polluting air, and the polluting the what is called a land, and also it is affecting both agriculture, even the animals, as well as including the human beings. Again, I will going to discuss this thing in the next slides. Then the discharging methods. So I said in the beginning, there were a cluster of the tanneries or industries along the Polar River Basin. They extract water from the polar because for the process of the leather, they require pure water.
for example, to process just 1 kilogram of leather, just imagine, to process just 1 kilogram of leather, they have to spend nearly 300 to 500 liters of water. Imagine how much of water is being, what is called, extracted from the polar river basin. Okay, and also they discharge all the waste into the polar river itself, or nearby streams, or nearby open land, or sometimes in the lake directly they release into the lake. So these are the various discharging methods. The next one, they will store all the residues, waste materials in the tank, what we call as a solar tank. You are going to see in after a few minutes. So they will discharge into the solar panel, and the water will be evaporated, and as a result the solid will be there, and they'll remove solid, they'll dispose it. So that is the one method they're using. And another method, during the what is called a rainfall season, during the rainy season, so they will discharge all the tanks which are storing all the wastewater, they release during the rain, so that nobody can identify this wastewater is coming from the tanneries. So this is the different discharging method they're practicing this study area. Please, sir. सर ने बताया कि टैनिंग से 3 प्रकार से पोल्यूशन यहाँ देखने को मिलता है। वाटर पोल्यूशन जिसके बारे में बताया गया है, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में सर ने बताया कि जिलेटिन को प्रोड्यूस करने के लिए वो बोन्स और फैट को ड्रम में बॉयल करते हैं और उसको डिस्चार्ज करते हैं। लैंड पोल्यूशन है, उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर ने बताई कि एग्रीकल्चर लैंड में फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें ये मटेरियल वो डिस्चार्ज करते हैं। फार्मर्स को ये लगता है कि ये ग्रीन मैन्योर है और वो उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन होता है तो वो जीरो होता है। तो ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये सर ने बताई है। इसके अलावा डिस्चार्ज करने के जो मेथड्स हैं, क्योंकि सर ने बताया कि पॉलर रिवर से जो स्वच्छ जल है वो ले लेते हैं अपने प्रोसेसिंग के लिए, लेदर प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन जब वो डिस्चार्ज करते हैं तो वो खराब जल को डिस्चार्ज करते हैं और 1 किलो लेदर को प्रोसेस करने के लिए करीब 300 से 500 लीटर जल का उपयोग वो लोग करते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ज्यादा है ये सर ने बताने की कोशिश की। इसके अलावा 2 तरीके के मेथड डिस्चार्ज के उन्होंने बताया कि टैंक्स के अंदर पानी के अंदर जो सॉलिड मटेरियल है वो होता है और सोलर पैनल्स के द्वारा उसको बॉयल कर लेते हैं, तो जल जो पानी है वो तो एवपोरेट हो जाता है और जो मटेरियल है वो वहां जमा हो जाता है। इसके अलावा उनकी चतुराई के बारे में सर ने बताया कि रेनी सीजन के अंदर वहां जो टैनिंग के लोग हैं, रेनी सीजन में क्योंकि जब बरसात होती है तो बहुत तेज बारिश होती है, पता नहीं चलता कहां से डिस्चार्ज किधर जा रहा है, तो रेनी सीजन के अंदर वो अपना जो मटेरियल है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि उससे ये लगे नहीं कि डिस्चार्ज किधर से आ रहा है और कहां से आ रहा है। सर ने डिस्चार्ज मेथड्स के बारे में ये बताया। सर थैंक यू सर। So the last one is the treatment plant. So any pollution come out, if you treat properly, there will not be any issue at all. Okay. Here, the major pollution is the chromium. Okay. The point number 1, they spent the chromium in the, in the factory. They will not use it for the next process because they may say the quality of leather will go down, so that they cannot sell it in the market, particularly the European market. So that is one. So the second one, the most of the tanneries they're having the own the own treatment plant. Most of the industries are having one treatment plant, and there are different small scale tanneries also found into 3 categories. So what are the 3 categories? They have a raw material and they will do up to finish level, and there are categories with the raw to semi-finish. I will show you the next picture. The other one is semi-finish to finish. So most of the Western countries, apart from our local market raw and skins, the European, even the North America, even the South America also, they send the raw hides and skins to India, even for Bangladesh, Sri Lanka, even Pakistan for the processing. So we are receiving more pollution. And again, we will send the same leather as a semi-finished one, and they will finish it
with a different color, with a different design of a different dress model and all, and they will sell it again to the developing countries for a higher price. So we are inviting more pollution, and also we are paying a heavy for that leather product. So this is going on in our country. Please, sir. सर ने जो नेक्स्ट स्टेज है ट्रीटमेंट प्लांट की उसके बारे में बताया कि सभी जो टेनरीज होती हैं उनका अपना ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन सर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो विदेशी जो बाहर के देश हैं जिसमें अमेरिकन हैं और यूरोपियन देश हैं, वो अपना रॉ मटेरियल जो होता है वो हमारे यहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रॉ मटेरियल जो होगा उसके अंदर ज्यादा सीवेज होगा, ज्यादा उसके अंदर पोल्यूशन होगा, तो हमारे यहाँ पे जो टेनरीज हैं वो उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, तो जितना भी उसका पोल्यूशन है वो हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में आ जाता है, और फिर सेमी प्रोसेस्ड जो मटेरियल है वो हम उनको वापस भेजते हैं और वहां पे वो उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके अच्छा बना के और उसके अंदर कलरिंग करके और फिर हमें ज्यादा महंगे दामों में बेचते हैं। यानी टू वे प्रॉफिट जो है वो बाहर के जो कंट्रीज हैं वो हम लोगों से इस तरह से इन टेनरीज का उपयोग करके ले रहे हैं। सर, thank you, sir. So at the background you can see how the hides and the skins are being stocked in a tan yard, and also the bottom you can see how the common salt is being smeared over the hides and the skin, and they'll keep it for the next process. Okay. So, the beginning itself, I said, most of the industries are clustered in this region because of the climate conditions. It is a dry weather prevailing here. So once the process is over, so they can put it in the sunshine so that it will be get dried up so soon. So they can, it will be very easy for them to take it to the next process. And the second one is a well-connected transportation. There's an airport, and you have two metro, Chennai and Bangalore. You have a trunk road. You have a very good railway network. So because of network, the transportation, the business is going on in this area. And already we said the river, the Pala, which gives rise to pure water. And also, we have a very good communication network. Unlike earlier, we have a very good communication network also. And particularly Muslim community alone taking up this business, almost 95% of this business being done only for those people. And as I said, is situated between Bangalore and the Chennai, so which will be helpful for speed up their business. So on the background, again, you can see how the chemicals and the liquid acids are being piled up in this area. And I said at the beginning that the wastewater which are released by the tanneries without a proper treatment, as a result, that the entire region, the Pala River basin was earlier considered was a rice bowl region. So after the Tanjore, this is the second largest rice bowl region of South India. So all the government of India, Food Corporation of India, even the local Tamil Nadu government, they used to go there for a procurement of paddy for the public distribution system. But nowadays, those system is not available because the entire paddy cultivation is dropped because we know that the paddy required pure water. It cannot stand on the saline water. As a result, the agriculture produce of paddy is gone. The next second standing crop was sugarcane. There were 14 sugar mill was there in and around the Pala River Basin. 14 sugar mill was there, both government as well as the private owned one. But now we have only one sugar mill. The rest of the mills were
closed because they don't have a particular yield of a sugar cane. Because sugar cane also cannot withstand with the saline water. So these are the very obvious impact how the tannery is affecting the agriculture. So please sir. सर ने बताया कि वहाँ टैनरीज इतने ज्यादा होने का कारण क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके कारण वहाँ पे ज्यादा चमड़ा उद्योग का स्थापना है। इसमें कुछ फैक्टर्स के बारे में सर ने बताया, जैसे सर ने बताया कि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वहाँ की वो शुष्क हैं, ड्राई हैं, जिसके कारण जो लेदर है उसको आसानी से सुखाने में उनके लिए आसानी रहती है। वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ का, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट है वहाँ नजदीक, 2 मेट्रो लाइंस हैं जिसमें चेन्नई और बेंगलोर, इसके अलावा रेलवे का नेटवर्क है वो भी बहुत ही अच्छा है, सुदृढ़ है। रिवर पार्लर जो रिवर है उससे पानी मिल जाता है, जल की उपलब्धता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बेहतर है, और वहाँ जो कम्युनिटी है जो इस काम में लगी हुई है उनका ये कार्य है शुरू से ही, तो इस कारण से वहां पे ज्यादा टैनरीज की स्थापना हुई है। फिर सर ने बताया कि किस प्रकार से इन टैनरीज के प्रभाव के कारण वहां के कृषि है उसको नुकसान हुआ है। सर ने बताया कि उस रीजन के अंदर 2 महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती रही हैं, एक चावल वहां बहुत ज्यादा उगाया जाता था, इसे राइस बाउल ऑफ द रीजन कहा जाता रहा है, और सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो तमिलनाडु सरकार हो, वहां पे प्रोक्योरमेंट होता था राइस का और पीडीएस के डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। लेकिन चूंकि वहां जो कल्टीवेशन है वो, क्योंकि राइस को स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है और वहां जो पानी है टैनरीज के कारण उसका गंदा हो गया नदी का, तो इसके कारण जो कल्टीवेशन है वो काफी तेजी से उसमें गिरावट आ गई, तो वो प्रोक्योरमेंट भी अब बंद हो गया वहां पे। दूसरा जो फसल जिसकी बात सर ने की है वो गन्ना है, शुगर कैन भी काफी मात्रा में वहां उत्पादित होता रहा है, लेकिन और उसका परिणाम ये था कि वहां पे 14 शुगर मिल्स थी पहले, लेकिन क्योंकि जो जल है वो एल्कलिन हो गया, सलाइन हो गया, उसके कारण शुगर कैन है उसका प्रोडक्शन भी घट गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे इस समय सिर्फ 1 मिल स्थित है शुगर कैन की। तो इतना बड़ा प्रभाव जो है टैनरीज के कारण वहाँ एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिल रहा है। सर थैंक सर। So I already said most of the tanneries are scattered in most of the area. In some region, in 4 regions, they have very clustered in nature. So because of the pollution, Supreme Court has given a direction. Every industry should go for common, effluent treatment plant. Since most of the tanners are having what is called less in production, so they wanted to represent the government of India as well as the Tamil Nadu government. As a result, the government, both government has proposed to have common effluent treatment plant, wherein state government will give 50% and central government will give 30%, and the tanners have to meet out 20% of the common effluent treatment plant cost. So while collecting the money from each tanners, and most of the tanners, they are undercoating the actual process of the leather, because per day if they're processing 10,000 kilogram of leather, they may not tell the actual figure. They'll give only 5,000 kilogram of leather. So since they're given undercoated the value, the government also constructed the common effluent treatment plant with their volume of leather processed per day. Once the common effluent treatment plant was established, it's a functioned one. As a result, they found most of the wastewater was spilled over the common effluent plant, because they said initially the less leather. They're processing just 5,000 kilometers of leather per day, but actually they are processing more than 20,000 to 50,000 per day. So as a result, there was some more effluent water. So there is no what's called corrective measures, though we are having the common effluent treatment plant. So this is another big issues going on in this study area.
Please, sir. सर ने बताया कि बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि टैनरीज के लिए उनका खुद का एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जिससे जो सीवेज निकलता है इंडस्ट्री से वो नदी में नहीं जाए या बाहर के क्षेत्रों में नहीं फैले। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जो ऐसी टैनरीज जिनका प्रोडक्शन कम है, जो छोटी टैनरीज हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये माना कि कुछ टैनरीज मिला के एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर सकती हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 30% और स्वयं का 20% पैसा उनको लगाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया, टैनरीज जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया कि अंडर प्रोडक्शन दिखाना शुरू कर दिया। ये वो 500 किलो लेदर का प्रोसेसिंग करते हैं तो टैनरी की साइज बड़ी बनानी पड़ेगी और पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, 100 किलो प्रोडक्शन दिखाना शुरू कर दिया और प्रोडक्शन कम दिखाया तो टैनरी की जो साइज है वो कम हो जाएगी, पैसा कम देना पड़ेगा उनको बनाने के लिए, वो कार्य करने के लिए। तो लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि प्रोसेसिंग तो हो रही है ज्यादा की और एफिलिएंट जो प्लांट लगाया है वो कम लेदर के लिए बनाया गया है, तो जो बचा हुआ है वो स्पिल ओवर हो जाता है वहां पे, वो फिर एक पोल्यूशन के रूप में बाहर निकलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो टैनरीज हैं वो सिर्फ उतना ही जो मटेरियल उन्होंने दिखा रखा है वही ट्रीट करते हों और बाकी को ट्रीट ही ना करते हों और उसको डिस्चार्ज कर देते होंगे। तो ये सब चीजें जो इम्पैक्ट है वहां पे एनवायरनमेंट पे, वो सर ने बताने की कोशिश की है। सर, थैंक यू सर। So if you look out to the stakeholders, central government, state government, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board, NGOs under public participation. So these are the people involved in these issues. Central government, they want to promote foreign exchange where the leather is standing 4th or 5th places in the foreign exchange. So they don't want to ban the tanneries despite a lot of pollution. And state government also thinking that it gives a lot of employment opportunities for the local people. So they're also thinking of not take any drastic measure towards the tanners. And the Central Pollution Control Board, so they come here and they conduct a kind of experiment. We have a Central Research Institute, CL, Central Research Institute, that's a central government institution here, and they're bringing a lot of technology. So what is the one technology? There's chromium which are spent for the process, they can recover. They can recover the spent liquid in the effluent water back to the the tanning process. So the technology is there, but what under technology we have GIF, Global Environmental Facilities. So the global environmental facilities will give technology plus 50% of the financial grant to the tanners to adopt the technology. The tanners are very much reluctant how to meet out the 50% of the grant. So the Central Pollution Board, though they have a liaison with the GIF, the Global Environmental Facilities, which is a subsidiary organization of the United Nations Environmental Program, but they are unable to meet out this condition. See the State Pollution Control Board role, they used to go to all the tanneries once in a month. You see, without the knowledge of the tanners, they will have to go there, they have to collect the sample of the water from each unit, from each stages. They have to bring to the lab, they have to study. If the pollution load is very high, so they'll issue notice, they will instruct abide the treatment plan, otherwise they will put a seal. But mostly here, what I found from the study area, before the Pollution Control Board officers go into the tanneries, they'll get some tip of information. So they will pump more fresh water to dilute the pollution level in the polluted water. So these are the issues going on in the study area. Then the NGOs, the non-governmental organizations, mostly the farmers, they are protesting
against the tanneries. They wanted to allow only the vegetable tanning, not the chrome tanning. And irrespective of a lot of agitation, but the Supreme Court has banned some 250 tanners since they're not following the common infant treatment plan. So that is the role of NGOs. Their demand was fulfilled, and public participation also, because most of the people, they earlier used to have water from the well, which in the house itself they used to have well, that open duct well, but now all the wells are closed because they have to draw water from the faraway places. They have to walk long distance. Otherwise, the bullock cart has to bring water from food hills. But from food hills, there is the pollution. That the water will be very pure one. So they have to pay heavy cost to take this water. So these are the various stakeholder activities found in this study area. Please, sir. सर ने जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में, उनके रोल के बारे में बताया, और सर ने बताया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट्स हैं वो इन टैनरीज को बैन नहीं करना चाहती। उसके दो मुख्य कारण सर ने बताए हैं कि केंद्र सरकार है वो तो इसलिए बैन नहीं करना चाहती कि फॉरेन एक्सचेंज आता है, और सर ने बताया कि ये चौथा ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जिससे हमें सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। राज्य सरकार इसलिए बैन नहीं करना चाहती क्योंकि वहां लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा मिलता है। तो इन स्टेक होल्डर्स का इस प्रकार का रोल उसमें सर ने बताया। इसके अलावा जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है उसके बारे में सर ने बताया कि सेंट्रल पॉल्यूशन जो बोर्ड है वो उसका ये एक प्रक्रिया है कि हर महीने टैनरीज में जाए और वहां पे सैंपल कलेक्ट करे और अपनी लैब में उसका पॉल्यूशन लोड चेक करे। लेकिन होता क्या है, जैसा आम हम देखते हैं कि जब पॉल्यूशन बोर्ड का कोई भी मेंबर वहां जाता है तो उनको पहले से पता चल जाता है कि आज पॉल्यूशन बोर्ड की कोई टीम आने वाली है, तो वो उसके अंदर पानी ज्यादा मिला देते हैं अपने प्रोसेसिंग के अंदर, जिससे डाइल्यूशन हो जाता है और उनका पॉल्यूशन लोड है वो कम अपने आप हो जाता है। तो ये सेंट्रल पॉल्यूशन जो बोर्ड है उसका रोल सर ने बताया। इसके अलावा वहां जो लेदर इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, और टेक्नोलॉजी ये है कि जो क्रोमियम स्पेंट होता है उस क्रोमियम को रिकवर किया जा सकता है दोबारा से प्रोसेसिंग में लाने के लिए। लेकिन उसके लिए भी जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है, जो फैसिलिटेटर है इस के अंदर यूएन की एजेंसी है, वहां पे भी जिफ जो है वो 50% ग्रांट देती है उस टेक को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन जो टैनर्स हैं वो भी उस जिफ के साथ मिलके और वो ग्रांट और वो टेक्नोलॉजी अपना अडॉप्ट नहीं करना चाहते। इसके अलावा जो एनजीओज का रोल है, मिलके प्रोटेस्ट वो करते रहते हैं। प्रोटेस्ट हुए हैं जिसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 250 टैनरीज हैं उनको बैन भी किया है। इसके अलावा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का जो रोल है वो, क्योंकि पब्लिक है उनको स्वच्छ पानी मिलता है नदी के विभिन्न स्ट्रीम्स के द्वारा, लेकिन अब उनके ऊपर प्रभाव ये हो गया कि नदी का पानी गंदा होने के कारण उनको स्वच्छ जल लाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के द्वारा वहां पे की जा रही है। सर Thank you, sir. So, from the agriculture department, so there is one scheme called the TV scheme, Daily Visit Scheme. So, agriculture department people used to go to the farmer's place. They have to collect a water sample and a soil sample. They have to test, and they have to give kind of a suggestion or a prescription to amend certain things for the soil. Okay, sometimes farmers they have some knowledge, the traditional knowledge. What they do, they will collect the coir. You know, there are a lot of coconut trees are in this region, and there also after the Kerala, they are pioneer in exporting coir pith to foreign countries. So in the coir pit area, I mean the industries, there are a lot of waste material, the coir pit waste material. They will collect it, they will use it in the agriculture field, and they will irrigate water so that the coir pit will retain the water. As it is, since the water is there, always such an effect will not be much in the
agriculture field. So farmers doing that innovative method, one. Number two, farmers, the paddy, the plantation of a paddy. So first you have to germinate the paddy, the region. Then once the saplings grows, they have to transplant into the already prepared land. So since most of the water are saline in nature, the farmers, they go to faraway places where the water is pure. They will germinate. They will bring the seedlings and they will plant the pulpit area. So the production will not be 100%. Probably it may give 40 to 50%. So that is the second way of innovative practices taken by the local farmers. The third one is farmers themselves collecting water sample and the soil samples, taking to the taluk office, tehsil. I think in the North India, tehsil we say taluk. They have a soil and testing laboratory. They are giving the soil and their properties testing and the chemical properties testing as well as the biological properties testing. So they will get their prescription and they will try to implement in the agricultural area. Please, sir. उसने बताया कि जो प्रभाव एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ रहा है उसके एवज में वहाँ के जो कृषक हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य करने लगे हैं। सर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उनके फील्ड में जाते हैं और वहां से टेस्टिंग के लिए सॉइल एंड वाटर लेके आते हैं और उनको सजेशंस देते हैं कि किस प्रकार से आप वहां ट्रीटमेंट करके अपनी खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। इसके अलावा सर ने एक मेथड बताया, एक इनोवेटिव मेथड कृषकों के द्वारा वहां इजाद किया गया है कि क्योंकि कोकोनट का प्रोडक्शन भी वहां होता है तो वो जो कोयर पिट होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसका वो उपयोग करते हैं, एज ए वेस्ट मटेरियल वो लेके आते हैं और जब पानी है उसमें से निकलता है तो वो पोल्यूशन को है वो कम कर देता है। ये एक इनोवेटिव मेथड फार्मर्स ने वहां अपनाया हुआ है। इसके अलावा सर ने बताया कि पेडी जो है उसका पहले जर्मिनेशन होता है अलग फील्ड में और फिर जो तैयार किया गया फील्ड है उसके अंदर उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो फार्मर्स जो है, क्योंकि पेडी है वो सलाइन वाटर में जर्मिनेट करने में बड़ी दिक्कत होती है तो कहीं दूर जाकर उसका जर्मिनेशन करवाते हैं। जब सैंपल तैयार हो जाते हैं सीपलिंग्स तो उसको फिर अपने फील्ड में लाके वो ट्रांसप्लांट करते हैं। चूंकि 100% प्रोडक्शन तो उससे भी नहीं होगा लेकिन कम से कम कुछ उससे फायदा उनको हो जाता है। इसके अलावा सर ने बताया कि फार्मर्स स्वयं भी जो तालुक होता है वहां पे, जो हमारे यहाँ तहसील जिसे हम कहते हैं वहां तालुक कहा जाता है, वहां पे जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं सॉइल और वाटर के लिए, उन टेस्टिंग लेबोरेटरीज में अपने वाटर के सैंपल और सॉइल के सैंपल्स लेके जाते हैं और फिर वहां से प्रेस्क्रिप्शंस उनको मिलता है कि किस प्रकार से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जो फार्मर्स ने वहां अपनाए हुए हैं। सर Thank you, sir. So on the background, you can see a different kind of semi-finished leather. So from this stage, they export to foreign countries, and they will make all different kind of apparels with coloring, design, and they will marketing. So at this stage, we are innovating more. The pollution is very high, and as I said earlier, the pollution, we are inviting more pollution, and the gain, the economic gain is very, very less. So this is the bad situation almost all the developing nation is facing. See, this is a picture of River Pala. Where you see the coconut tree along the bank of Pala River. In the front end, you can see a kind of that is a lime pit. The limestone which are using in the lime pit, after usage of one time, so they will bring it here, and they don't find any places to dump it, but they will dump along the river bed. So once river, get into water at the time of monsoon season, the heavy alkaline may lead to the water into saline in nature. So this practice is still going on till now. No one has taken any measures.
Please, sir. सर ने बताया कि किस तरह से हम ज्यादा पोल्यूशन लोड को इनवाइट करते हैं। सर ने पहले बताया था कि फॉरेन कंट्रीज में हम सेमी प्रोसेस जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ से करवाते हैं और फिर उसको बाजार में प्रोसेसिंग करके वो लोग फॉरेन एक्सचेंज हमारे से कमाते हैं। सर ने एक फोटो दिखाया रिवर बेड के किनारे का जहाँ पे कोकोनट ट्रीज हैं और साथ में दिखाया कि किस प्रकार से लाइमस्टोन का जो लोड है वो टैनरीज से वहां पे डंप किया जाता है और वो डंपिंग जब होती है तो मॉनसून सीजन में जब नदी है उसका पानी बढ़ता है तो वो पानी के साथ जब मिलता है तो वो पानी में चला जाता है लाइमस्टोन और उसके कारण एल्कलिनिटी जो है वाटर की वो बढ़ जाती है। तो ये अभी भी वहां पे जारी है, अभी तक कोई भी इसके विरुद्ध में कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है जिससे इस पोल्यूशन को रोका जा सके और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। सर थैंक यू। So this is the next place where the dumping, again the lime and other waste is being dumped along the express road, and the passengers who are passing either by two-wheeler or any mode of transportation, certainly they will get eye irritation, and also they have a kind of difficulties in breathing. It may gives rise to suffocation. So I think you can see the tannery also. Directly there's releasing that wastewater into a small pond. That is also you can see that. So this is the same. The building is taken up in the closed shot. Instead of pumping the wastewater into solar panel or a treatment plant, so illegally they're releasing this water into sewer. Finally, it goes into again the pond. So these are the practices that they are doing, not only one place, in many places. So even the pollution control board also knows every time they come here, they put a penalty, they pay the penalty, again they take up these issues. So this is a never-ending process going on in this study area. Sir? सर ने बताया कि किस तरह से ये पोल्यूशन लगातार हो रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स के द्वारा सर ने बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से डंपिंग आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। रोड के किनारे डंपिंग की जाती है जिससे वहां से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, इरिटेशन होना, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होना, ये सब होता है। इसके अलावा सर ने फोटोग्राफ्स के द्वारा ये भी दिखाया कि किस प्रकार से टैनरीज से जो सीवियर है उनका, उसके द्वारा वो इलीगल तरीके से अपने टैनरी का जो वाटर है, गंदा पानी है, उसे बाहर निकालते हैं और वो या तो नदी में जाता है या किसी तालाब में जाता है, जिससे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एनिमल्स हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। इसके अलावा पोल्यूशन बोर्ड का जो रोल है उसके बारे में सर ने बताया कि पोल्यूशन बोर्ड है वो विजिट करता है लगातार, वहां पे जो कमी पाई जाती है उस पे एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन वो वापस जब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर से वो शुरू कर देते हैं, भर देते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं, और ये एक अनएंडिंग बिना रुकने वाली एक प्रोसेस है जो वहां लगातार जारी है और लगातार एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। सर थैंक यू सर। सो you can see we collected a water sample as well as a soil sample to determine the physical properties as well as the chemical properties as well as the biological properties. So the terms of soil, what is the physical properties? Mostly the texture. So we know the soil is disintegration part of the major rock. The dimension of the soil particles will be less than 1 millimeter. Once the soil is in a loosey condition, it is easy for the plant to germination, to penetrate the root, go to up to the bottom level. So it is so easy for the plant to have a respiration and also to take the nutrients as well as the water from the soil. So we know how the process is being affected. We take food directly by hand. We drink water directly by hand, through mouth. But how the plant does, the simple method is
the carbon, and the plant does the photosynthesis, wherein the energy is being stored in the either root or in the shoot or leaves or in the flower and other things. So here, through the osmosis process, the water from the subsurface of the soil being observed by the plant. So we have a primary root, and we have a secondary root, and we have a root hair. So through root hair only, all the water is being observed because due to the osmosis process. So what is the osmosis process? During the daytime, the water available on the plant, either leaves or a stem or other things, is being released because of evapotranspiration. As a result, there is a vacuum. So since water is already there at the bottom with a heavy density, so through the root hair, the water will pass through. Once the water pass through root hair, it also absorb various minerals to support the plants. If the soil is a very rigid one because of the various chemicals, the application of the various chemicals on the soil, it may gives rise to a kind of solids like a cement, says it cannot do its function properly. So that is the major issues found in the study area. Please, sir. सर ने उस क्षेत्र के जल और सैंपल्स हैं उनके बारे में जिक्र किया कि सैंपल्स को देखने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जा सकता है। और हम ये जानते हैं कि जो प्लांट होता है वो सोइल से किस प्रकार से जर्मिनेशन उसका होता है, किस प्रकार से वो जल प्राप्त करता है। हम ये जानते हैं कि सोइल जितनी लूज होगी, उसका जो पार्टिकल है वो जितना लूज होगा, उतना ही आसानी से प्लांट द्वारा उसके अंदर जर्मिनेशन होगा और रेस्पिरेशन होगा। और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसके बारे में बताते हुए सर ने बताया कि किस प्रकार से प्लांट ऑस्मोसिस से अपने रूट हेयर के द्वारा जल प्राप्त करता है सोइल से। और जब दिन के समय पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उससे एवापोट्रांसपिरेशन हो जाता है तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होने से नीचे हायर डेंसिटी का पानी वो रूट हेयर के द्वारा प्लांट के अंदर आता है। तो यदि केमिकल्स के प्रेजेंस के कारण यदि वहां केमिकल्स होंगे सोइल के अंदर तो वो सोइल जो है वो रिजिड हो जाएगी लूज होने की बजाय, और रिजिड होने से वो जो प्रोसेस है वो उसमें बाधित होती है, जिससे कि प्लांट के जर्मिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है। Sir. Thank you, sir. See, you can see the embankment on your, for me, it is left-hand side. You can find the lake. On your right-hand side, you have agriculture land. On the agriculture land, you can see sugarcane, paddy, as well as coconut trees. See the next slide. The same place taken from the distance, the effluent water from the tanneries, from the sewer directly going into the lake area. So there is a this is the condition still is going on without any fear or any kind of conditions. So just assume almost all the water in the lake is being polluted, and there are cattle, buffaloes, even the goat and the sheep also taking the same water for drinking purposes. Just imagine what kind of health condition will prevail in this area. And as yesterday Professor Jaini was talking about the questionnaire, the questionnaire also made a most of the cow, buffalo, as well as goat, sheep, it often gets miscarriages. It is unable to give proper yield. So normally it will give taking place in this area because of the pollution water. Even
what is called hen. The yielding of the hen also very less, and if at all there, and that full form egg is not forming this area. That is another issue. And we also tested with the breast milk, the chromium content level in the breasted milk with the women. It is higher than the what is called permissible limit. And we also tested with coconut water. You know that coconut water, which is absorbed with a lot of small thin tissues. You might have thought it might have been filtered by the we have filtered all the chromium and other things. Even the tender coconut, we found 2.5 parts per million of chromium. Then imagine how the surroundings, all the flora and the fauna may have that chromium presence. So we also tested in the lab also. That I will show you in the next picture. Please, sir. इस प्रकार के जो पॉल्यूशन है उसके इम्पैक्ट को बताने के लिए सर ने बताया कि किस प्रकार से सैंपलिंग के द्वारा ये जांचा गया है कि क्या इम्पैक्ट इसके हो सकते हैं। सर ने फोटोग्राफ के द्वारा दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जहां पे पैडी और शुगर कैन की खेती होती थी वहां पे टैनरीज का जो पोल्यूटेड वाटर है वो जाने के कारण वो प्रोडक्शन कितना खराब हुआ है। साथ में ही प्रोडक्शन ही खराब नहीं हुआ, पेडी और जो कोकोनट है साथ में आपके शुगर कैन है, उस एग्रीकल्चर यील्ड के अंदर भी क्रोमियम के जो हैं वो मौजूदगी देखने को मिली है। सर ने बताया सर्वे भी किया गया है, क्वेश्चनरी वगैरह के द्वारा सर्वे किया गया है। उस सर्वे में पता चला है कि लाइव स्टॉक के रिप्रोडक्शन के ऊपर भी इसका बुरा असर क्रोमियम की प्रेजेंस का देखने को मिला है। इसी प्रकार से जो मुर्गियां होती हैं उनकी जो यील्ड है, एग की यील्ड है, उसके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा वुमेन्स में जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम मिला है। साथ ही सर ने बताया कि कोकोनट का जो पानी, जो कोकोनट जल, जो नारियल हम पानी वाला नारियल है जिसका उपयोग हम करते हैं, उसका जो जल है उसके अंदर भी क्रोमियम की जो प्रेजेंस है वो 2.5 ppm तक मिली है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा खराब है और इट्स इम्पैक्टिंग बैडली द हेल्थ ऑफ पीपल, क्योंकि हमें सिर्फ हमारी बॉडी के लिए 0.005 ppm क्रोमियम की ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कुछ सैंपल्स के द्वारा जो अध्ययन किया गया सर के द्वारा, वो सर ने बताया है कि क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है। सर, थैंक यू सर। सो as you said, it's a rice growing region, paddy growing region. I said after Tanjore, Tanjavur, the second rice growing region of South India. See, within a span of 3 decades, the paddy cultivation has been replaced by the fallow land. So, though it is agricultural land, you can see now only the Parthenia plant. You know, Parthenia plant is an alien species, and which gives rise to the various phenomena in the local people. They have skin disease, they have asthma, and many more diseases because of the plant. The plant is said to be a biowar plant sent by some a neighbor country, and this plant is capable of growing at any climate conditions, whether it's a sun or rain, that the plant will grow. So only those plant is occupying this study area. Number 2, on the background you can see the coconut tree. The health of the coconut tree is being determined by the chlorophyll. If the plant is good condition, the chlorophyll should be in a greenish in color. Suppose the chlorophyll is in a yellowish in color, then you can assume that the plant is under some kind of stress. The stress could be with a lack of water, or the stress could be with a more saline water, or the stress could be with a more acidic in water. So because of this stress, the plant leaves, coconut plant leaves are turned into yellowish in color. Again, if at all the florence
flower, Florence, we call it the Florence, is not much in the coconut tree, and the yield also very, very meager. I said beginning itself that Polar River Basin is the second place which are exporting coir wheat. But now there is no such a business taking place in this study area because of this pollution level. Please, sir. सर ने इस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट बताते हुए बताया कि किस प्रकार से ये राइस और कोकोनट ट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है। सर ने बताया कि तंजावुर के बाद ये दूसरा ऐसा क्षेत्र था जहां सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन होता है, प्रोडक्शन होता रहा है। लेकिन अब इस पॉल्यूशन के बढ़ने के कारण वहां जो पेडी का जो एरिया है दैट हैज बीन वो रिप्लेस हो गया है फेलोलैंड के द्वारा और वहां पे जो नया एक एलिन प्लांट है पार्थेनियम उसने उसकी जगह ले ली है। वो क्योंकि किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में उग जाता है, किसी भी स्थिति में वो ग्रो कर जाता है, इसलिए पार्थेनियम वहां ज्यादातर देखने को मिलने लगा है और उसका प्रभाव ये है कि वो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बुरी तरह से, जिससे अस्थमा, स्किन डिसीज जैसी बीमारियां लोगों को होने लगी हैं। साथ ही सर ने बताया कि जो कोकोनट ट्री है उसकी हेल्थ के ऊपर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है। सर ने बताया यदि आप देखेंगे तो कोकोनट जो ट्री होती है उसकी हेल्थ है वो क्लोरोफिल के द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है। यदि क्लोरोफिल है उसका कलर जो है यदि प्लांट का वो ग्रीनिश है तो इसका मतलब वो एकदम सही कंडीशन में है, और वो यदि येलोइश है तो वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, यानी उसके ऊपर किसी ना किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पे पोल्यूशन के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में बताया कि यदि कोकोनट ट्री येलोइश है इसका मतलब या तो एसिडिक या सैलाइन वाटर वहां पे ज्यादा पाया जा रहा है या उसका इम्पैक्ट या उसका स्ट्रेस उसके ऊपर देखने को मिलता है। उसकी फ्लोरेसेंस है वो भी इम्पैक्ट होती है और साथ में उसकी यील्ड जो है वो भी इम्पैक्ट होती है। सर ने बताया कि पालर रीजन के अंदर पहले कोकोनट का यील्ड था वो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन वो अब इस स्थिति में नहीं है, वहां की कंडीशंस डिटोरिएट हुई हैं। ये सभी की सभी जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हुआ है। सर थैंक यू सर। See, there are some farmers they wanted to make use of the fallow land into some marginal profit. For the marginal profit, instead of any other crop, they're going for eucalyptus. You know eucalyptus plant. There is a controversy also. The growing of eucalyptus may gives rise to groundwater issues. So it will deplete groundwater sources if you grow eucalyptus, I mean the plant. But knowingly, unknowingly, that the local farmers are going for eucalyptus plantations. And I said the beginning itself, how the sugarcane is being stunted growth. So normally the sugarcane grows up to 6 feet to 8 feet. The pricks, the juice pricks, density will be very high. Then the juice, the quantum of juice per can is earlier it was very high. Now it is become very less. And the diameter of the can is reduced to just like that 1 inch. Earlier it used to have a 3 to 4 inch. So these are the negative impact of tannery activities on the agriculture. So you can see the stunted growth of sugarcane. And this again the example, though coconut trees are existing here, but there is no, I mean, florence, and there is no fruit also. There is no tender coconut. See the weathers because of the high saline in the water. So these are the major issues going on this study area. So I said at the beginning, research, we do research in the arts and human science and humanities, in the science, social science also. At the beginning I said that we cannot say research cannot be with only one discipline. So it may be intradiscipline or interdiscipline or transdiscipline to prove how the pollution again I said the pollution is the process in which
deteriorate the environment. Here, how you have seen that the picture. I also interviewed the farmers. They said a lot of procurement actors coming down. There is no germination at all. These are the fact generated for using the questionnaire. But in the lab also, I wanted to test how the pollution is being affected that plants. So I took 25 black gram. You know black gram? For idli, we are using a black gram. For we are mixing rice with black gram for making idli batter. You know black gram? Okay. So I took 25 numbers of black gram, and 25 I put it in a controlled water. Controlled experiment. Controlled means with a fresh water. Then I took another disc, a glass disc. I put 25. So like that, I put a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 glass disc with 25 numbers of black grams. The first one is a controlled one, treated with pure water. The next one is 10% of the pollution water. The next one is 20% of the pollution water. The third one is 15% of the pollution water. 100%, 150, 200, and 250% of the polluted water. I allowed it for 20 days for germination. After the germination, the plant, the first one is the controlled one, wherein the 25 out of 25 seed, we got 25 plants. Whereas in the rest of the cases, while the pollution level increases, where the plant growth seemed to be a standard growth. Number one. Number two, the length is coming down, the shoot weight is coming down, the root weight also coming down, and what is called the other the leaves weight also coming down. So from this experiment, one can categorically say that because of the pollution, the plant is being affected. So we can prove it. There is no need for hypothesis, and there are scientists. Some scientists will accept the hypothesis. Some scientists may not accept the hypothesis. But here also the experiment directly proves that the existing fact in the study area. Please, sir. सर ने इनको बताते हुए बताया कि आजकल फार्मर्स जो हैं, क्योंकि पैडी की जो कल्टीवेशन है वो लगातार गिरती जा रही है, तो फार्मर्स हैं वो स्विच ओवर हो गए यूकलिप्टस, जिसे हम सफेदा कहते हैं, वो ज्यादातर मार्सी एरियाज में लगने वाला प्लांट है और एलिन प्लांट है बाहर का है, लेकिन यूकलिप्टस को अपनाने का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये रहा कि जो वाटर टेबल है वो लगातार गिरने लगी, क्योंकि यूकलिप्टस जहां लगाया जाता है वहां पे वाटर टेबल का डिटोरिएशन बहुत तेजी से होता है। ये एक गलत इम्पैक्ट है वो वहां पे देखने को मिला है। इसके अलावा शुगर कैन का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट को बताते हुए सर ने कहा कि जहां पहले 6 से 8 फीट का शुगर कैन होता था, वो आजकल उसकी हाइट है वो स्टंटेड हो गई है, ग्रोथ बहुत कम हो गई है, डेंसिटी है वो पहले हाई होती थी वो कम हो गई, उसकी क्वांटम ऑफ जो जूस था वो तेजी से गिर रहा है। इसके अलावा जो डायमीटर था, पहले 3 से 4 इंच का जो डायमीटर का गन्ना होता था वो अब देखने में मिल रहा है कि सेंटीमीटर इंच का जो डायमीटर होता था वो आजकल 1 इंच डायमीटर में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सर ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम इंटरडिसिप्लिनरी होकर और रिसर्च के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। तो सर ने एक लेबोरेटरी कंडीशंस में इस इम्पैक्ट को देखने के लिए वहां से जो वहां का जो पोल्यूटेड वाटर है उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या किया कि कुछ डिशेज ली सर ने और जो ब्लैक ग्राम होता है उसके बीज लिए, उन अलग अलग डिशेज में उनको जर्मिनेट कराने की कोशिश की। एक में प्योर वाटर काम में लिया गया और बाकियों में पोल्यूशन का लेवल बढ़ाते हुए जल का उपयोग किया गया। तो देखा गया
कि जो प्योर वाटर था वहां पे जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छे से हुआ ज्यादातर, लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे जर्मिनेशन है वो कम होता गया, और साथ में उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिली। उसका जो वेट था, चाहे वो लीव्स का हो, चाहे सूट का हो, चाहे रूट का हो, वो सारा का सारा वेट भी लगातार गिरता गया। तो कंट्रोल कंडीशंस में जो रिसर्च की गई उसमें भी इस प्रकार का इम्पैक्ट जो पॉल्यूशन का है वो देखने को मिला है। आगे बढ़ने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट part, I would like to request that we are moving towards 6 o'clock. It's our time to finish, but because we are discussing, so we can also, it may take some time, so please bear with us. We will try to finish it by extending 5 to 10 minutes. Okay, sir. So, thank you, sir. Sir, now. I'm okay, sir. Thanks. See, this is one classic example. Each house in South India, in the study area, they used to have a dug well. So actually, it's dug well. Since the water has become saline in nature, they closed the wells, and you can see that the pulley where they use they used to draw water from the bucket. Okay, that is one example. Now, so we said how the pollution affect the agriculture, how the pollution affect the human beings or the animal beings. So I said we collected a urine sample, we collected what is called a breast milk sample. We also tested with coconut water, and finally we want to test how it affects the human beings. We cannot test it directly with the human being. So instead of that, we have chosen albino rat. You know, albino rat is a rat. There are people keeping a pet animal, and again, I taken 2 albino rat. For 90 days, we grown under our observation. One albino rat is treated with normal water, normal food. The other albino rat was treated with the polluted chromium water. After 90 days, we dissected, we conducted a dissection. We found that kidney. We conducted microscopic investigation with the hair, brain, lungs, heart. So where we found the accumulation of chromium was found in 2 parts of the animal. Then imagine the same kind of experience could be seen in the human being also. So this is our findings. So on left hand side, you can find the normal size of the kidney or the animal. Whereas the other side, you have abnormal size, which was treated by the polluted water. So this gives a clear picture how that polluted water affect the other animal beings. Thank you, sir. थैंक यू सर। आपने बताने की कोशिश की कि वहां पे क्योंकि पानी जब स्वच्छ था तो डग वेल्स हुआ करते थे, उनसे पानी निकाल लिया जाता था, लेकिन क्योंकि बाद में जब पोल्यूशन बढ़ गया तो वो वेल्स हैं वो बंद कर दिए गए और उनके ऊपर यूज होने वाली जो पुली थी वो आपने दिखाई। इसके अलावा आपने बताया कि पूरे लेक्चर में किस प्रकार से एग्रीकल्चर पे, ह्यूमन पे इसका इम्पैक्ट देखा गया, किस प्रकार से सैंपलिंग करके और ये इम्पैक्ट देखा गया। लास्ट में आपने एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि किस प्रकार से एल्बिनो रेट्स हैं उनको 90 डेज तक कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करके स्वच्छ के साथ और एक पोल्यूटेड वाटर के साथ जिसमें क्रोमियम हो उनको ग्रो किया, तो उनकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन पे इम्पैक्ट है और प्रेजेंस ऑफ जो क्रोमियम है वो देखने को मिला। ये जो इम्पैक्ट है वो पोल्यूशन का जो है वो आपने बताने की कोशिश की है। थैंक्स सर। Thank you, sir. See, since most of the houses was closed, so the people are fetching water from the mountainous area, for faraway places, for about 10-15 kilometers area. And I said, sorry, this is a classic example for the air pollution, where these people are burning all the waste material, which gives rise to air pollution. Since the time is very short, just I'll run my slide. And this is the segregation in the treatment plant. All the waste material is being segregated and they'll be deposited in a proper place.
This is a solar evaporation pond. Solar evaporation pond where the tanneries send all the effluent water in the wastewater, and the water will be evaporated from the solar pan, and the solid one, the sludges and the solid one will be replaced after some time. But till now, for about 200 years over, till now, the Pollution Control Board of Tamil Nadu could not find the place where they can dump the waste dry material. So still the question is going on. And this solar pan, if it is a concrete one, there is no problem at all. So there are one earthen one with made up of mud, and easily it will break into 2 pieces, and the effluent water directly will go into the area where you can see that how it affects the coconut trees, the marginal area. So this is a solar pan, and this is a clarifier. See, the front end is a clarifier where the water is being rotated by a drum. As a result, the solid material will be suspended at the bottom. They will remove it. Beyond that, you can see one open artificial pond, wherein because of the chemical from the industries, even the vegetables from industries, they will, once they enter into the water, due to the chemical reaction, the oxygen from the water is being released. As a result, there will be a heavy demand on oxygen. We say normally biological oxygen demand or chemical oxygen demand. What is the chemical oxygen demand? Once the chemical parts go into the water, it will react with the oxygen will be released. So in order to pump oxygen into the water, they'll use a cow tongue, buffalo waste and cow tongue. They will use it in the water, so it will recharge more oxygen. Number two, they will have a kind of turbine. The turbine will rotate. You might have seen in many treatment plants. Once the turbine rotates over the water will be splashes. The water will go and up. As a result, the atmospheric oxygen will be recharged in the water. So these are the two methods are being practiced in the study area. Please, sir. सर ने जो इम्पैक्ट बताए हैं उसमें ये भी बताया कि किस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ने के कारण वाटर पोल्यूशन बढ़ा है और वहाँ का जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहा, जिसके कारण लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा सोलर एवोपरेशन जो उनके ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बताया, उनकी फोटोग्राफ दिखा के बताया कि किस प्रकार से जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें जो मटेरियल है वो पानी के साथ डाला जाता है और पानी है वो एवोपरेट हो जाता है और सॉलिड मटेरियल वहीं रह जाता है। लेकिन उस सॉलिड मटेरियल को भी कहीं डंप करने के लिए अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई। उसके अलावा और ज्यादा इम्पैक्ट इस बात का है कि वहां पे कुछ ऐसे सोलर पैनल्स प्लांट्स हैं जो अर्दन यानी मिट्टी के बने हुए हैं, जिससे वो जल्दी टूट जाते हैं और वहां का जो खराब जो पोल्यूटेड वाटर है वो स्पिल ओवर हो जाता है। ये एक की बात है। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में सर ने बताने की कोशिश की है। सर यस सर I have 2 more slide, but since the time is very short, okay, if you permit, I will stop it here. I am expecting a question answer, sir. Yes, any sir. doubt, Yes, clarification? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for providing such a nice knowledge with a particular case study, and it will be of great benefit to the participants. We will also be having the idea that how our research can be done on a particular issue. It's of great help. And now I have one question from Dr. Jitendra D. Soni. He wants to ask that what are the techniques which we can follow for environmental impact assessment? Sir, are they different from case by case? Yes, sir. So normally, sir, environmental impact assessment can be done with a big agency like a McDonald, NERI, National Environmental Research Institute, or IIT, with various
scientist. It's not one scientist can complete this project. It is a laborious work. You might have seen. We have collected data from the economics side and the historical side, biological side, geological side, and anthropological point of view. So it depends upon the project one, and also individually cannot do this work. And we can approach the major agencies like IIT, NEERI, or McNaught, or any other things. We can approach one. So we have 4 or 5 methods are there to conduct this methodology. One is a HADOC method. So HADOC method is the government of state government or central government or even the World Bank. They may conduct. They want to bring out any proposal or a project. Immediately they can form a committee, a scientific committee. Within a few weeks, they may collect the report. They give what is called the view, whether they can bring the project. It is beneficial for the community, or it will be adverse to the communities. So that is the HADOC method. Other one is a checklist method. Checklist method means they'll put various checklists like a water. Say water, surface water, groundwater, then atmosphere, air, then soil, then what is called population. So like that, they will give various parameters, and they will check one by one. They will conduct. So this is the current situation. So, current situation of the water. This is the current situation of air. This is the current situation of the population conditions. Suppose if industries comes, what will be the likelihood? Whether industries comes, it will give a positive impact like employment generation, or it may give what is called infrastructure like road colleges. So there are positives as well as negatives. So if industries comes, whether they may use air pollution, it may create a detrimental effect to the agriculture, and there will be a shortage of water. Water pollution may go up. So like that, they can examine it both ways through checklist method. Other one is the overlay method. So as I said now, suppose you want to find a place where you can dump all the city solid waste. So they can prepare one layer of agriculture, one layer of water body, one layer of lithology, one layer of lineament, one layer of population, and one layer of other land use map. You can overlap one another, and finally you can find the place where you can dump the solid waste like that. That is called overlay method. The other one is quantitative index method. So you can give weightage depend upon the proposal which you are going to bring in. Quantitative index method. So there are various methods. Thank you, sir. Thank you. There is one question, but you have already answered that question. Somebody is asking that which authorities can help us in such kind of studies. You have already answered that NEERI, IITs can be of great help in these studies. Yes. And somebody is also asking that from where we can get water quality data. So every tehsil is having a water quality lab, testing lab. From there, they can get these data. Yes, these are the simple questions which can be easily answered, and they can be given. Yes, so these are the questions which are asked. Now, I would like to thank Professor V. Madha Suresh for providing such a nice information and such a nice lecture to the participants. And we are very, very thankful. And now it's over to Jitendra. Thank you, sir. Thank you, Professor Suresh. Thank you, sir. We have really enlightened with this lecture because, the issue of environmental impact assessment you have taken right from the examples. So we all the participants and the team members got an insight that how to deal with when we are dealing with the environmental impact assessment case in any project or in any research. Thank you, Dr. Ravindra, also for a very good moderation and translation, because the translation has made this lecture more useful for those people also who are from the Hindi background. Today, I must thank to Monica West-Ranjan also, because she is covering the today's session and writing the report, which she will present in the next session.
We are really very thankful, Professor Suresh, because you have spared time for us, and this, because of your deliberation, our entire this participant team got benefited. But for the formal vote of thanks, I request Dr. Munesh Kumar. Dr. Munesh Kumar is a controller of examination in Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar, and this the institution which is also a knowledge partner for this program. So over to Munesh. आज के वक्ता प्रोफेसर वी माधव सुरेश सर, आपका इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर, आपने पर्यावरण के बारे में इतना बहुत सरल तरीके से समझाया, हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रतिभागियों को इससे निश्चय ही लाभ मिला होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। रिपोर्ट राइटिंग की कन्वीनर डॉक्टर रेणु पुनिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत सादर आभार। दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को हुए सेशन की आज हिंदी में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयुषी जैन एवं इंग्लिश में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रेणु बगड़िया मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में रिपोर्ट का कार्य कर रहे मोनिका बिस्ट रंजन मैडम, आपका भी बहुत बहुत आभार। इस प्रोग्राम के पैटर्न को पैटर्न मेंटर कन्वीनर एवं डॉक्टर जेडी सोनी सर, डॉक्टर रविंदर कुमार जी सर, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी ओपी सैनी जी सर एवं समस्त ऑर्गेनाइजेशन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही इस प्रोग्राम से जुड़े सभी प्रतिभागियों का सादर आभार। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। और टू सोनी सर। Thank you, Dr. Munesh. And now, with due permission of our today's special guest, Prof. Suresh, we just want to end this meeting. You want to say something regarding this program, Dr. Suresh? Yes, sir. I want to thank you in person, as well as I want to thank all organizers, institutions. Yesterday only I seen our JNU professor presentation, so quite interesting. I would have seen other presentation also. Due to some problem, I can unable to do that because I had some computer problem. The Windows software is given problem. And I also having some health problems, so I was wondering, I didn't tell you, so now I'm telling. So that's what I was going one by, very slowly, and so that I can make it my presentation perfectly. This is my third program through online. I'm so happy that I met many people, more than 200 people, and each and every speaker is very excellent, chosen such a resource persons. Even Ravi was my close friend from BHU, but I could not interact with him due to some reasons. So I request you to conduct a similar program in future also. So today is Dasara, Vijay Dasami. So auspicious day, you give me an opportunity to perform my academic line. This is my life. Teaching is my life. So I thank you to fix this date this time. I didn't think about the 25th is Vijay Dasami day, but you're given a very auspicious day so that I can see many people around here to listen to my lecture. I'm very grateful to you as well, members. I'm like to meet you in some other occasion also, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Definitely, we will meet in some other programs also, and wish you a very happy Vijayadashmi and Dussehra. Thank you, sir. Thank you, sir. With your permission, now I'm ending this meeting. Please, sir. Please. Thank you.